Welcome to the Future Tech Spotlight online learning So platform. today we are going to see the partitioning in the Hive, how we can divide the tables into some parts based on the value of a particular column. So we have already seen this with the ADMS, of course. We have done this partitioning in the ADMS lab in R programming. Okay, so here also we can partition our table based on course, based on city, based on country. So as and when any type of query comes for that particular column or filtering for that particular column, then it is very easy to get the data from that part. Okay, because as we have already seen that Hadoop is HDFS, means Hadoop file system. So whatever the data we are storing, it is always in the form of table, not in the form of table, in the form of files. Okay, so here also, as and when you partition your table, that different files will be created based on the given partition name. Okay, so that is what the concept in the Hive. So as and when you want to access any one partition, then that point of time, that Hadoop system only required to access that one file. Okay, now you think about the big data and where all the filterings are done based on the partitioning, then it is very easy to retrieve the required data. Okay, so that is what the advantage of the partitioning. Okay, so partitioning data is stored in the slice, the query response time becomes faster. So partitioning in Hive and divide the data among the different database based on the particular column. कैसे होता है वो हम देखेंगे. There are two type of partitioning. One is static and another one is dynamic partitioning. In the static partitioning, you require to give the partition name, but in dynamic partition, based on the given data or whatever the required files are there loaded, based on that it will create the partition. So there are two types of partitioning. The first one is static partitioning. So now we will see how we can create this static partition. So static partition के लिए क्या करना होगा, आपको जो कॉलम है वो मैन्युअली डिवाइड करना है. मैन्युअली डिवाइड करना कैसे होगा, बिकॉज बिकॉज पहले हमारे पास जो डेटा था, जैसे हम टेबल क्रिएट करते थे, that time we are giving a table field name. Okay, table name and field name with data type. Okay, and we have added only one more line, that is row format delimited fields terminated by comma, because each and every files are there in the each and every data is in the form of files. तो वो फाइल में जो डेटा है वो कैसे डेलिमिनेट हुआ, कैसे bifurcate करेंगे, तो that is based on the delimiter. Okay, so not necessary all the time comma, but you require to give any one delimiter over here. So this is what we were doing earlier, but here you require to give that partition name also. So whenever you want to partition any column, don't give your partition column in the normal section where we are giving the column name and data type, but you have to give one more line, that is partitioned by then the column name and the data type. Clear? So now the system come to know that okay, this particular table is partition table. Okay. ओके, वॉइस नहीं आ रहा है. Okay, I am not able to increase this. Wait a minute. Okay. So now am I able? Hello, am I audible now, students? Am I audible properly? Okay, thank you, Saifullah. Okay, I required to share the screen. Okay. Hope my screen is visible to you, everyone. That PPT. Okay. So screen is visible, right?
Okay, so what I was talking about, as in when you want to partition your table, okay, there are two ways you can partition. One is static partitioning and another one is dynamic partitioning. In static partitioning, you require to give partition name at the time of creating the table. Okay, so this is what the static partitioning, okay, where we have given all the details regarding the partition. Okay, so let's do it parallelly in the Hive command. Okay, this Hive CLI. Okay, let me close this terminal, and now we will start with the fresh terminal. Okay, and here we are required to give Hive. Okay, then you will get that Hive prompt. Okay, or you can say Hive CLI. So this is Hive CLI we are having. Okay, then you require to give what, you require to give here, required to create a table. Okay, so at the time of creating the table, you are having two options. The first one option is you create a table normally as you are creating it, and load all the data in the file. Okay, so all the data means here we are having all the course data. Maybe possible you are having, let's say, 10 courses in the college, then all the 10 courses data is there in the file all data.txt. Here you can see this all data.txt is having Java, HTML, Excel, okay, Hadoop, Python, there are DBA, there are so many type of data over here. So these are the course, different type of course in the college, you can imagine. Okay, so that you can load in this particular table. So now the table is having all the type of data. Now after that you require to create one table with the partition. Okay, so now the same table structure is over here, same table structure is here also. Okay, but that course field is not there, but we have declared this as a partition by course. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे किया है partition by course. Clear? And then after you can give this command, insert override table partition is equal to Java, then select स्टार भी कर सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो ऑल जिसमें हमने सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया है, उसमें से जावा का जो डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है, अभी जावा डेटा वी आर स्टोरिंग इन द मेन स्टूडेंट टेबल. Okay, so that is one way you can do. Another way is what you can also load different course file. Okay, that is also possible. तो पहले हम लोग ये वाला देखते हैं कि different course partition कैसे हम दे सकते हैं. ठीक है, so यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ. Now in this table, this is the Hive command where I am creating one table where the fields are roll number, student first name, last name, and partition by course. Okay, so we have created one table under the demo database. Okay, so if I require to see this table, तो show tables करेंगे तो अब मिलेगा आपको. पहले आपको करना है use demo, and then after show tables you will get one table that is student. Okay, so we have just now we have created one table students. Okay, with the partition. Now here you cannot write normal insert command. Why? Because the partition is there. Okay, so if I write insert into table name is demo dot student values. Okay, और यहाँ पे मैं अगर roll number 111 comma x comma y comma course is equal to, let's say, Java. Okay, ये अगर मैं देती हूँ, this is normal insert command. Now this command will not work. Why? Because the data is column is partition in the table, so we have partition table over here, so required to give data that way. Now another way we can insert the data in this particular table for using the load command. Okay, and in that load command also you can specify the file. See this is the load command of the table where we are having this java.txt file. Here you can see this java.txt file where Java data is there. Okay, so that is there, and
insert local data, local in path, load data, local in path. Local means data is there in the Linux environment only, and this is the working directory of the Linux where java.txt file is there. Now if you have inserted this particular file somewhere else, you require to give that whole path. And then into table is demo.students, and partition course is equal to Java. So here you can see this course is equal to Java. Okay, so this is what we require to give to load the data. Okay, so now we will give this over here. Okay, so now the data is there. We can see select star from demo.student and you will get the details. Okay, so see Java details are there. Now this is null कैसे आया यहाँ पे, देखो null कैसे आ रहा है यहाँ पे. तो जो डेटा आपने यहाँ पे एक भी लाइन छोड़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखो एंटर करने पे एक लाइन आ रहा होगा उसकी वजह से, बट उसने देखो यहाँ पे कोर्स का नाम खुद ही ले लिया है. समझ आया सबको ये? ठीक है. Now I want to check in the Hive warehouse how this particular file created. Okay, so what I require to do is I require to go to Cloudera and then hdfs dfs ls slash user slash, instead of Cloudera I want to check Hive. Okay, so is there any yes, one folder is there, that is warehouse. Under warehouse, okay, warehouse का spelling गलत है, warehouse. Okay, there are so many tables, databases created, and I am interested in demo database. Why? Because just now we have created table in under demo database. Okay, so now under demo database there are two files, and I am interested for student file, right? We have created this student. Okay, here you can say this course is equal to Java. This particular file is created under this Hive default environment. Okay, so now if I will add one more or load one more course data, that one more file will be created. So now we will see this, how we can do this. Just take another load command. Okay, let's say control C, और हम लोग हडूप का भी ले सकते हैं. यहाँ पे हडूप का डेटा है, फाइल सेव एज हडूप कहाँ पे स्टोर हुआ है, क्लाउडेरा में भी, क्लाउडेरा में ही है. सो हडूप जो है वो हम लोड कर सकते हैं जिसमें सारा हडूप का डेटा है. ठीक है, सो नाउ वी कैन गो टू, नाउ हियर वी विल गिव हडूप. ओके, एंड पार्टीशन क्या हो जाएगा हमारा, माय पार्टीशन विल बिकम कोर्स इज इक्वल टू हडूप. क्लियर? सो यहाँ पे जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको लेना है. ठीक है, तो दिस इज माय नेक्स्ट लोड, you can say. Okay, so this is next load. This is the Hive command. Here I will give this load function. Okay, hadoop.no file matching. Okay, path नहीं मिल रहा है उसे. So now we will check again where this file is exactly. Hadoop file is there. File save as, it is there in the Cloudera, hadoop.txt, but there is no txt with it. Okay, only Hadoop is there. Okay, and we have given txt also, that's why it is giving error. Okay, so only Hadoop. Clear? जो भी फाइल का जिस हिसाब से आपने दिया है वैसे ही उसको देना है. ठीक है, so now we will run this particular command. ये रहा Hive command. Okay, so this is done. यहाँ पे हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया. अब यहाँ पे हम वापस देखते हैं क्या हुआ. ठीक है, क्लाउडेरा में, क्लाउडेरा में क्या देखना है, अंडर स्टूडेंट अर्लियर इट वाज कोर्स इज इक्वल टू जावा, ओनली वन फाइल. नाउ वी हैव लोडेड अनदर कोर्स, दैट इज Hadoop
So now we will see, is there any other file is there or not? Yes, course is equal to Hadoop. So there are two files now. So as in when any select command comes where and with where clause where course is equal to Hadoop, then system required to refer only this file. It will not go for any other file. So yeah, now you can say you can say see this कि यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम सेव होगा और ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा. ठीक है. So this is what the advantage of partitioning. Okay. तो हम लोग थे अभी यहाँ पे. अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी एक डेटा में सारा का एक टेबल में सारा का सारा डेटा है, उसको पार्टीशन करके स्टोर करें. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. एक तरीके से देखा कि हमने अलग अलग पार्टीशन से डेटा को स्टोर किया. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और हम ये कर सकते हैं कि सपोज वी आर हैविंग one normal table without partition and all the data loaded in that partition. Okay. And then after we create one partition table, and based on this table we load the data. So it will create a partition based on given command. Okay. This is the command through which you require to give the partition. तो कैसे करना है उसको, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, create table. This is normal table. Okay. टेबल का नाम क्या है, student info all. So we will go for Hive CLI to do this. Okay. और यहाँ पे हमने वो क्रिएट किया. ठीक है. और क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा लोड भी कर दिया है. देखो लोड भी हो गया है डेटा. ठीक है. सो नाउ वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर टेबल demo.db. ओके. उसमें यहाँ पे एक दूसरा टेबल आ गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो अंडरस्कोर ऑल. Okay, so now we go for student underscore info underscore all. Okay, all data.txt. Now there is no course bifurcation, nothing, because this is normal table. Clear everyone? ये normal table है, इसके लिए normal file txt file जो हमने दिया वही वहाँ पे load हुआ है. ठीक है. Now this particular data we can use to store in partition table. Okay, so now the command is this: insert override table demo student partition course is equal to Java, select role student first name last name from demo student info all where course is equal to Java. Now what it is doing? Now this is map reduce job. ओके. जैसे मैंने बात किया था कि जब हम इंसर्ट करते हैं तो डेटा फिजिकली स्टोर हो रहा है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ मैप रिड्यूस जॉब. And here what we are doing is we are just taking the demo dot student table. Okay. और उसके अंदर हम ये वाला डेटा डाल रहे हैं. किसका डेटा? स्टूडेंट इन्फो ऑल, जिसमें सारा का सारा डेटा है. बट कौन सा डेटा? ओनली कोर्स इज इक्वल टू जावा. Okay. So this is what we are doing through this command. Okay. So this is your static partitioning. Okay. So you required to give that partition name, that is compulsory. So ये हम यहाँ पे रन करेंगे हाइव के अंदर. ठीक है. तो हाइव में हमने जब ये रन किया तो देखो यहाँ पे ये मैप रिड्यूस जॉब जो है वो स्टार्ट हो गया. ठीक है. सो नाउ what it will do, it will just take all the data from student info all table and extract the course is equal to Java and then load into the student table. Clear? So now we will check, select start from demo dot student. Okay. So now here you can see this in student table we are having, यहाँ पे ये पूरा मैप रिड्यूस जॉब हुआ है कि फेल हुआ है. सो लेट्स चेक अबाउट द शो पार्टीशन डेमो डॉट स्टूडेंट. ओके. पहले हम चेक कर लेते हैं. इट इज गिविंग एरर. ओके ओके ओके. इट इज गिविंग एरर बिकॉज हमने ये करने के लिए सबसे पहले वी रिक्वायर टू गिव टू स्टेटमेंट्स to get this property. Okay. This we require to do with the Hive. Okay. ठीक है. और फिर हम लोग करेंगे अभी लोड
this command, insert override. So map is 0, reduce is 0. Now map is 100%. Okay. And then we will go for select star from demo.student. ओके अभी भी हडूप का ही हो रहा है, तो हम पहले वो ही देख ले कि वहां पे डेटा है स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो ऑल. Okay. So now here you can see this, why it is not taking any data, because the Java is small over here and I was giving capital Java. Clear? So that's why it is not taking this. So now we will do it again with the small Java. Okay. So now the Java is also there, and it will create a new, you can say, यहाँ पे हम स्टूडेंट में देखेंगे तो एक नया वहाँ पे क्रिएट होगा. Small Java is also there, capital Java is also there. Clear, everyone? So this is what static partitioning you can say. Now for the dynamic partitioning, what we require to do? If we want to see the number of partition, then this is the command, show partitions demo student. Okay. So this we require to run over here. Show partition. So now here we are having Hadoop, Java, and small Java. 3 partitions are there. Okay. So now another one is how to create dynamic partition. Okay. Now for the dynamic partition, what you require to do is, instead of giving that course is equal specific course, instead giving a specific course manually, you require to give only course statement. Here you can see this insert override table. स्टूडेंट के अंदर हम इसी का डेटा डाल रहे हैं और कोर्स, तो जितने भी पार्टीशन इसमें होंगे वो सारे के सारे इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो वी कैन डू. ओके. सो ये हम कर सकते हैं. गो टू हाइव और पार्टीशन पेस्ट. सो नो ओके ओके सॉरी, माई डीबी नहीं, हमें डेमो लेना है. यस यस, बिफोर दैट वी रिक्वायर टू गिव दिस टू and then go for this. Okay, so now this is also one type of map reduce job. Okay, so now here we will see, अभी ऑटोमेटिकली सारा डेटा इसके अंदर स्टोर होगा. स्टार फ्रॉम डेमो डॉट स्टूडेंट. क्लियर? देखो बीडीए भी आ गया इसके अंदर. ठीक है. सो जो ऑलरेडी है उसमें ऐड नहीं होगा, जो नहीं है वो डेटा यहाँ पे ऐड हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमने इंसर्ट ओवरराइट किया हुआ है. ठीक है. तो जो कॉमन कॉलम्स है वो ओवरराइट हो जाएगी यहाँ. ठीक है. So in static partition, you require to give this partition name manually. Okay. And you can drop this partition also if possible. If you want to drop this alter table name, drop partition, and then partition name. That way you can delete also. You can delete permanently. Now, one question from my side: if I will delete this course is equal to Java partition, what about the data? The data will also get deleted, or data will be as it is in the file? So now I require to do this. This is demo 1. Okay. And we will drop this particular control L. सबसे पहले ऑल्टर टेबल और जावा को हम डिलीट कर रहे हैं, और अब हमारा कमांड है शो पार्टीशन स्टूडेंट. ओके. तो यहाँ पे हम शो पार्टीशन कर रहे हैं. हाउ मेनी पार्टीशंस आर देयर? नाउ देयर इज नो स्मॉल लेटर जावा. ओके. नाउ आई विल चेक दिस डायरेक्टरी whether the directory is having that or no. The file is not there. Clear? So file is also deleted from the Hive environment. Clear, everyone? Okay, so that way you can delete your
partition also. Okay, now another सो ये हमने पूरा पार्टीशनिंग कैसे होता है वो सब देखा अभी, ठीक है, ये दोनों का क्या डिफरेंस है वो भी देखा. अनदर important one is Hive query language is operators. We can use different type of operator, plus, minus, multiplication, division, mode, or, and. These are the operation we can use. We will use just one operator over here. Let's say select. In student we are having roll number. Let's say describe demo dot employee. We will take this employee detail. Okay, we are having this table columns. Okay, and I want to give some discount, some bonus on salary. ओके तो वो बोनस जितना भी है उसका कुछ परसेंट अगर हमें देना है तो उस तरीके से यू कैन गिव फॉर्मूला. और सपोज आपको कुछ डिडक्ट करना है सैलरी में से, प्लस करना है, एवरीथिंग यू कैन डू. सिलेक्ट सैलरी -100 फ्रॉम एम्प्लॉय, और अकेला एम्प्लॉय नहीं लिखेंगे हम, डेमो डॉट एम्प्लॉय. ओके सो दैट इज पॉसिबल. ओके तो जो भी उसकी सैलरी थी उससे अब ये सैलरी में 100 रुपीज जो है वो कम हो जाएंगे. तो हियर यू कैन से द सैलरी कॉमा सैलरी 100 अगर मैंने दिया है तो देखो यहाँ पे देखो 100 कम आ रही है सबकी. ठीक है, सो दैट वे यू कैन गिव एनी टाइप ऑफ ऑपरेट, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर in the query. Okay, not equal to less than, so that will come under where clause. Okay, select a star from employee, not only employee, demo employee, where salary less than 5000. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर यू कैन यूज. क्लियर? ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो 5000, 5000, 7000, दैट वे वी आर गेटिंग द सैलरी. ओके सो दिस यू कैन यूज अंडर दिस टेबल. तो यहाँ पे भी देखो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 10% ऑफ द सैलरी वी आर फाइंडिंग आउट. ठीक है, सपोज 10% बोनस देना है तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, दैट यू कैन. Now suppose you want to use some functions, aggregate functions, then mathematical functions, aggregate function, and building functions are also there in the Hive. Okay, so mathematical functions कौन से हैं? So these are all function you can use. Okay, कैसे use करना है उसको? तो yes, based on given data type, if you are having integer data type, then you can use all this type of functions. If you are having string data type, then you require to use this functions. Okay, so based on of course data type. ठीक है, तो अगर सपोज आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है इन एनी क्वेरी, ऑलरेडी यू हैव डन लॉट ऑफ दिस थिंग्स अंडर DBMS ऑफ कोर्स, बट सपोज यहाँ पे आपको कोई लेट्स से log 10 कैलकुलेट करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. डेमो डॉट एम्प्लॉय. ओके सो log 10 आपका आएगा. अगर साइन चाहिए आपको, साइन यूज करना है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, कोई अगर आपके पास डेटा जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो फ्लोरिंग और सीलिंग करके यू कैन गेट द डेसिमल वैल्यू. ओके तो डेटा इस तरीके से आएगा. तो वो आप कर सकते हो, कोई भी आपके पास जिस हिसाब से कॉलम है उसके ऊपर यू कैन गिव दिस function. You can create you can use square root function to get square root absolute data if you want positive value. Okay, so based on requirement you can give this. Okay, these are all aggregate functions. Okay, but aggregate function you cannot use normally with this normal query, but you require to give grouping query for this. Okay, because आप कुछ rows को इकट्ठा करके कुछ यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है. ठीक है, तो वो इकट्ठा करने के लिए यू रिक्वायर्ड ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग कौन सी कॉलम पे हो रही है उसके बेस पे एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा. ठीक है,
So suppose I want to see the maximum value, maximum salary किसकी है, ठीक है. So select max salary from demo dot employee. Okay. So now this is again a kind of map reduce job. ओके, मैप रिड्यूस जॉब क्यों है ये? बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेशन. यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है. कैसे एग्रीगेशन होगा कि पूरी की पूरी सैलरी को वो देखेगा और उसमें से जो मैक्सिमम है वो आएगा. तो मैक्सिमम इज 7,000. ओके, सो सेम वे मिनिमम. ओके, काउंट, सम. ओके, सम ऑफ सैलरी यू कैन गिव. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस आर ऑल मैप रिड्यूस जॉब बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेशन होगा. ठीक है. अब इसके ऊपर कोई कंडीशन देनी है तो कंडीशन कैसे मिलेगी आपको? सो कंडीशन ऑलवेज बेस्ड ऑन, अगर कुछ कंडीशन दे रहे हैं आप तो वो कंडीशन डिपार्टमेंट वाइज सबको सैलरी चाहिए. तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी करने के लिए क्या करना होगा? सो वहां पे आपको ग्रुपिंग करना होगा. ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कोड. तो यहाँ पे आपको ग्रुपिंग में सैलरी मिलेगी, हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी. ठीक है. सो फॉर दैट यू रिक्वायर टू गिव ग्रुपिंग. और उसके ऊपर भी अगर आपको कंडीशन चाहिए. ठीक है, ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, आप ग्रुपिंग में क्या कर रहे हो, ग्रुप वाइज आपको एक एक मैक्सिमम मिल रहा है. ठीक है, बट उसके ऊपर भी यू वांट टू गिव some more having clause is for condition on grouping. Okay, having department code less than 30. ठीक है, तो इस तरीके से आप हैविंग क्लॉज लगा सकते हो. वेयर क्लॉज जैसे काम करता है वैसे ही हैविंग ग्रुप बाय पे काम करता है. इसके बाद ऑर्डर बाय सैलरी कर सकते हैं. ऑर्डर बाय सैलरी क्यों करना है? सो दैट यू विल गेट दिस डेटा, आउटपुट डेटा इन ऑर्डर वे. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में. अगर असेंडिंग ऑर्डर की जगह पे डिसेंडिंग करना है तो क्या करना होगा? ऑर्डर बाय सैलरी क्यों नहीं लिया ये ऑर्डर बाय सैलरी? ठीक है, क्योंकि उसको एलियास देना था मुझे. माई डेटा इज सम सैलरी, सम ऑफ सैलरी. ठीक है, और उसको हमने क्या किया अभी, एस एल एलियास में कन्वर्ट किया और उसको हम ऑर्डर बाय कर रहे हैं. ठीक है. ओके, सो दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर. द सेम आई वांट टू डू विद द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको पीछे क्या लिखना है, DSC descend. Okay, so you will get the data in descending order. So this is what you can do with the Hive query. Okay, another functions are string related function. You can use string related function. Just like कल उस दिन हमारा कॉन्केट नहीं हो रहा था. ठीक है, तो कॉन्केट कैसे करना है यहाँ पे वो देखते हैं. फॉर दैट वी रिक्वायर टू गिव कॉन्केट फंक्शन. कॉन्केट emp first name comma emp last name. ठीक है, सो दिस इज द कमांड. ओके, अभी उसके भी बीच में मुझे और एक स्पेस चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कमांड, दिस इज द क्वेरी टू फॉर कॉन्केटेनेशन. ओके, सेम वे अगर मुझे यहाँ पे अपर केस में चाहिए डेटा, डेटा इज ऑलरेडी देयर इन द अपर केस, राइट? सो आई वांट सपोज इन लोअर केस. ठीक है, तो लोअर में आ जाएगा डेटा. ठीक है, उसको अगर अपर केस में चाहिए तो अपर केस में आएगा. ट्रिमिंग करना है तो ट्रिमिंग इज पॉसिबल. एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम, दोनों जगह से आपका जो स्पेस है वो निकल जाएगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे. अभी वन मोर फंक्शन इज दैट इज सब एसटीआर. सब एसटीआर फंक्शन इज जस्ट लाइक मीड फंक्शन इन एक्सेल. ओके, सो फर्स्ट नेम से मुझे पहले से 2 कैरेक्टर जो है वो फैच करने हैं, तो दैट इज पॉसिबल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग विद द इनबिल्ट फंक्शन इन हाइव. ओके, तो ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देखो यहाँ पे SQRT सैलरी, मैक्सिमम सैलरी. ठीक है, अपर केस, लोअर केस,
ये सब हम कर सकते हैं. ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज. हैविंग क्लॉज कब होता है? जब हमें ग्रुप बाय के ऊपर कुछ क्या देना है, आपको कुछ कंडीशन देनी है. ठीक है. एंड ऑर्डर बाय. ठीक है. Now another one is view and indexes. That is also very important in database. Okay. Whenever we want to use any type of, suppose आपका एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल बहुत बार यूज हो रहा है कॉम्बिनेशन में, और कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप बहुत बार यूज कर रहे हो, तो यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल टेबल फॉर दिस particular query, and that virtual table you can use as a table to fire a query to analyze the data. Okay, so that is also possible. So here, how to create view? So create view name as select then query, whatever the query is there. Okay, so अभी हमारे पास डेमो टेबल है, तो हम लोग व्यू बना रहे हैं. व्यू हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं व्यू को. ठीक है. तो व्यू का कुछ भी नाम होगा, पर ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, उसका हमने व्यू का नाम क्या दिया है? कॉस्टली एम्प्लॉय. ठीक है. सिलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, जॉब एंड सैलरी, वेर सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, एंड जॉब नॉट लाइक एम परसेंटेज. एम परसेंटेज मीन मैनेजर नहीं होना चाहिए. ठीक है. So that is also possible. So we will go for the Hive CLI. Okay, so this view is created. This is virtual table, and we can fire query on this particular table, costly employee. ठीक है. Select star, जितनी भी query अभी तक हमने देखी वो सारी query हम इसके ऊपर fire कर सकते. The same way you can create index as you have created in the Oracle. So create index name on table. यहाँ पे हमने create किया as bitmap with deferred rebuild. So this is the command to create any index. तो अभी जो हम index create कर रहे हैं वो किसके ऊपर है? Employee code. So as and when new employee code you insert, okay, automatically the file or record existed based on the sorting value. Okay, तो sorting के हिसाब से यहाँ पे इंडेक्सिंग के हिसाब से फाइल का जो है वो लोकेशन मैप होगा. ठीक है. तो दिस वे यू कैन क्रिएट इंडेक्स, एंड सेम वे ड्रॉप इंडेक्स. इंडेक्स नेम इज द इंडेक्स यू कैन ड्रॉप. सो ड्रॉप इंडेक्स नेम ऑन डेमो एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉय के ऊपर जो भी हमने इंडेक्स अभी क्रिएट किया, दैट इंडेक्स यू कैन डिलीट. क्लियर एवरीवन? यस. Thank you, everyone.